So this is our third video in compilation process. हम लोग इससे पहले बात कर लिए कि कैसे क्रॉस कंपाइलर को इंस्टॉल करना है और फिर उसमें पाथ ऐड करना है. देन हम लोग ये थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका पूरा प्रोसेस कैसे चलता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस किए हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की. और फिर लास्ट तक ये प्रोसेस भी हम लोग समझ चुके हैं. हम लोग फिर प्री प्रोसेसिंग मेन फाइल से प्री प्रोसेसिंग फाइल कैसे बनते हैं वो भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ इट इज कन्वर्ट फ्रॉम main.i फाइल टू असेंबली फाइल और main.s फाइल. हम लोग इसका बारे में बात करेंगे. तो वी हैव सीन दैट we have taken the example of this main file, that is this file. There is a very simple code actually written, and we have compiled it and produced the main.i file. Today we will see how to produce main.s file. So you have to open your command prompt and you have to locate your file. So if you see that this file is showing, there is main.i file is present, and main.s file, main.i file is also present. So now we will try to convert or produce the main.s file. So the command is for that just run avi gcc -mcu equal to cortex m4 then mthumb. Then this is actually the optimization level. The optimization level 0, I have kept it 0. And then you have to give for assembly file, you have to capital S, you have to mention here. And then the input file main.i, that is our input file. And then if you don't write anything, then automatically it will produce main.s. Okay, if you see that the main.s file is created here. Okay, and if you want to give any special name, you want your then output dot is, and the greater than arrow symbol, actually you have to put main.i, then greater than arrow symbol, and then your expected name which you want to create, that name in your file name .s file name. Then give enter. then the जो नाम आपने दिया था उस नाम का .s फाइल बन जाएगा. और अगर आप कोई भी डोंट गिव एनी नेम, देन इट विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस main.s फाइल. ओके, सो हम लोग दोनों ही सेम होता है, बोथ आर इक्वल. So now we want to see what is present in this .s file actually. So before that, the output main.input file is main.i and main. So from the preprocessor file to assembler file, who came into this picture? Compiler came into this picture. So compiler convert this main.i file into s file, main.s file. Okay, and this stage does what does it is syntax and semantic analysis. Syntax means what? Syntax means something like that you have written your code but you don't follow the C syntax. C syntax means you
don't give the semicolon after any variable, or like you have written something and you forgot to mention this semicolon, then it will produce syntax error. So that is checked by this compiler when converting from preprocessor file to S file. तो और फिर आपने इक्वल टू प्लस यहाँ पे लगा दिया, तो दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस सिंटेक्स एरर। तो अगर इंग्लिश ग्रामर की सेंटेंस मतलब सेंटेंस में बात करें, तो आपने जो इंग्लिश का जो सिंटेक्स होता है प्रॉपरली, जो रूल्स होता है उस रूल को आपने फॉलो नहीं किया। जैसे सी का जो रूल्स होता है उस रूल आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो वो फॉलो नहीं किया तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एरर देना चाहिए। तो उसी का चेक यहाँ पे हो जाता है। ओके, और फिर सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस मीन्स अपने मान लेते हैं कि आपने ये कॉमा तो दिया, ओके, यहाँ पे इंटीजर भी लिखा, सब कुछ सही लिखा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि जैसे किसी सी मतलब एक कैरेक्टर रख दिया, इस तरह से एक कैरेक्टर रख दिया आपने, सी रख दिया, कोई वैल्यू ना रख के आप सी एक रख दिया। तो ये क्या होगा, ये मतलब जो आपने सिंटेक्स तो फॉलो किया, लेकिन ग्रामर के रूल्स फॉलो, मतलब ग्रामर जैसे होता है कि अगर इंग्लिश के टर्म में बात करें तो सब्जेक्ट के बाद मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो रूल्स होता है, इस रूल्स को आप फॉलो नहीं किया। आप इसमें एक फंक्शन बनाया जिसमें आप एक वॉइड रखा, और फिर वॉइड के जगह में आपने वैल्यू पास कर दिया। तो ये सिंटेक्स तो फॉलो हो रहा है, लेकिन आपने वॉइड रखा तो उसमें कोई वैल्यू नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने किसी वेरिएबल मतलब एक फंक्शन बनाया और उसमें कोई आर्गुमेंट या 3-4 आर्गुमेंट है, लेकिन आपने आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक एरर। सो ये इस स्टेज में इसका एनालिसिस होता है एंड ट्रांसलेट सी टू असेंबली। तो हम लोग देखे थे डॉट आई फाइल में एक्चुअली में क्या रहता है, एज इट इज सी कोड ही रहता है, बस इसमें एक्सपेंड कर देता है या कमेंट को ओमिट कर देता है, हेडर फाइल की जो फोल्डर है वो सबको इंक्लूड कर लेता है। लेकिन ये सी कोड ही एक्चुअली एज इट इज रखता है। जैसे कीवर्ड वोलेटाइल कीवर्ड था, तो वोलेटाइल कीवर्ड को एज इट इज ही रख दिया इन्होंने, लेकिन इसने क्या किया, डॉट इस फाइल ने इट्स कन्वर्ट टू assembly code. Let's open the main.s file. You can see here that there is no C code present here. There is the instruction. Actually, in the above you will see lots of line written here. That is basically the whatever I have used in our uh, command mthumb cortex m4. That's hardware information, and arm instruction information is present here. The cortex m4 GCC compiler, that is the file name, what's the file name, main.c, this type of information here. But your main information present here, main code main dot. So the main is a function, that function assembly function is written like this. There is a no argument, something like this. What is the written in this instruction for the assembly corresponding to this main C function, main C function, they have converted into assembly codes.
Okay, so compiler does it, converting the translating C to assembly. And next you will see that apply compiler optimizations if enabled. So if you enable the optimization, I have kept the optimization level 0. So if you kept any optimization level 2 or 3, you can write also here. So that optimization level also apply here during converting the C to assembly code. Assembly contain the low level इंस्ट्रक्शन for target structure. Target structure जो भी आपका कंट्रोलर है उसका corresponding it's contain the low level instructions. So I have kept that is actually the assembly output simple as I must show like this. The move sphere that is actually the whatever the assembler instruction that will present in this file, and we have also seen that that is already present here, and the reflect.cp will execute later. So after the assembly file, we'll go to the next step, that is object file. How to create the object file? The next step is object file. We'll see today also that how to create the object file. So to creating the object file from assembly, so the input file will be assembly code main.s and the output file will be main.o. So who convert this from assembly to object file? Here come into picture that the assembler convert the assembly file to a relocatable object file. So why it is called relocatable object file? Because its content not hardware specific uh, address. That's why it is. So we'll see details in later. Uh, so what's its generate? Assembler generates, the assembler converts it actually binary meshing codes. So it will convert assembly code to binary meshing codes, and also symbol table and relocation records. So it's also contain the record or address, but it's not the actual address. That's why it is relocatable. Okay, so the imported file not yet execute. It is not uh, uh, the main.o file is still not able to execute in the target machine, but it is relocatable object code. Okay, so we'll see how to convert it. So if you see that there we have created from main.c to main.i and then main.s. Now we will create the main.o file, that is object file. So what is the command for that? So you should write the rlearn avi gcc mcu, that will be same. Then here you have to write o. In place of s you have to write o, capital O, then provide the input file main.s file, and automatically it will produce main.o. Sorry, it will be main.c, not o. It will be small c. So you can see that uh, main.o file is created here. Okay, so the command is rlearn avi gcc mcu equal to cortex m4 mthumb optimization level 0, then the uh, object file created
here you have to put small c, then the input file main.s. Okay, so we have seen that. You can see that there is a main.o file. So from the main.s file, uh, assembler generate main.o file. Actually, that is not readable code file, main.o file. So that's why it is look like. So what is actually con what is the content of this file? इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें जनरली रहता है कि आपका symbol and your code instruction in binary code. Hmm. So we'll see that what is actually content. There is the text section, data sections. Text means whatever the instruction for this code, that is actually the code sections. And the data, what is the initialized data is present, that is in data section. And dot bss, zero initializing data, and symbol table and relocate entry, that's content in this dot o file or object file. So next video we'll see how to read it, and also the linking file we'll see in our next video. Thank you.